Hello, this is Dr. Arun Kumar, and today we are discussing about basic anatomy of ear and its applied aspect. So, ear can be divided anatomically and clinically into three parts. Yeah, external ear, middle ear, and internal ear. The external ear consists of auricle या pinna, external acoustic meatus या external auditory canal EAC and tympanic membrane, which is situated between the external and the middle ear. Auricle या pinna has shell-shaped appearance composed of yellow elastic cartilage covered with perichondrium and skin. Posterior surface of pinna या medial surface is evenly convex and smooth. The पीछे वाली है ना, जो posterior side वाली, while its anterior surface या lateral surface, जो lateral surface है, is concave on which there are several semilunar folds and hollows between them, है ना, बहुत सारे depressions and elevations in the lateral surface of the pinna we have seen. The skin on the lateral surface is closely attached to the perichondrium, जबकि whereas on the medial surface the skin is loose due to presence of thin layer of loose tissue. The free outermost semilunar fold at the margin of pinna is called helix. जो हम बाहर का पार्ट देख रहे हैं, free outermost semilunar fold at the margin of pinna is called helix, and parallel to it and in front of the helix there is another fold called antihelix. तो helix और antihelix, two part. A cartilaginous protrusion situated at the lower end of antihelix is called antitragus. तो tragus के opposite side में antitragus. The lower part of the pinna, which is devoid of cartilage and consists of well developed fat and cellular tissue with a small number of vessels and nerve, is called lobule. Okay, and the small cartilaginous projection anterior to the external opening of the ear canal is called tragus. Another thing, funnel shaped hollow space bounded anteriorly by the tragus and posteriorly by the antihelix is called concha, and the hiatus between the tragus and the helix is named incisura terminalis. So an incision made in the area will not cut through the cartilage and used for endodural approach in surgery of the external auditory canal or the mastoid. For reconstructive surgery of the middle ear, pinna is the source of graft from the tragus, concha, fat from the lobule, and conchal cartilage is also used to correct the depressed nasal bridge. अब हम पिन्ना से रिलेटेड कुछ कंडीशंस और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट देखते हैं. तो अगर पिन्ना इज लार्ज साइज मैक्रोशिया, पिन्ना स्मॉल साइज मैक्रोसिया, और पिन्ना इज एब्सेंट, इट इज कॉल्ड एनोशिया. मैक्रोशिया, माइक्रोसिया एंड एनोशिया. कुछ कंजेनाइटल कंडीशंस मिलती हैं. वन इज डॉर्विन ट्यूबरकल या प्रोमिनेंट डॉर्विन ट्यूबरकल, यानी दैट इज ट्यूबरकल या टैग प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स के ऊपर के हिस्से में. दूसरा बैट ईयर. इफ अगर एंटी हेलिक्स एब्सेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैट ईयर. तो यानी उसका जो lateral surface of pinna है look like flat. If antihelix is more prominent than helix, then the condition is known as Wildermuth ear. Or if pinna is thickened or look like cauliflower, then it may be perichondritis of pinna.
Generally, upper limit of pinna corresponds to the level of eyebrow and lower limits correspond to the base of alveoli या टिप ऑफ द नोज, है ना। तो पिन्ना का अपर लिमिट आईब्रो के लेवल पे रहेगा और जो पिन्ना का या लोब्यूल वाला पार्ट जो है वो एलिनेजी या टिप ऑफ द नोज के कोरस्पॉन्ड रहता है। बट अगर अपर लिमिट ऑफ पिन्ना आईब्रो के लेवल से या नीचे है तो इस कंडीशन को बोलते हैं लो सेट ऑफ ईयर और ये टीचर कॉलिंस सिंड्रोम में हमें मिलती है। प्रोट्रूजन ऑफ पिन्ना इज फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड है तो ये फरंकुलोसिस के कारण हो सकता है। अगर फॉरवर्ड, आउटवर्ड और डाउनवर्ड है तो ये मैस्टोइड एब्सिस के कारण हो सकता है, जिसे इरेक्शन ऑफ पिन्ना भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग कि टेंडरनेस ऑफ ट्रेगस या ट्रेगस साइन इंडिकेट्स फरंकुलोसिस एट द एंटीरियर वॉल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और सेकंड टेंडरनेस ऑफ पिन्ना इंडिकेट्स पेरिकोंड्राइटिस while tenderness at the Simba concha, that is mastoiditis. In fistula test, by pressing and releasing the tragus alternately over the external auditory canal, increases pressure is transmitted to the labyrinthine fluid through fistula, which cause vertigo and nystagmus. Outer surface of pinna is more prone to frostbite because the skin is adherent to the underlying perichondrium and there is no subcutaneous tissue. प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।